Am I audible, students? Okay. So, 12th tomorrow, math first chapter. First chapter is relations. Okay. अच्छा कौनसी रिलेशन पाई तुम जानी जो गोटे पेयर दरकार कौनसी भी रिलेशन पाई हम गोटे पेयर तैयारी करिया पड़िबो so this is your chapter 1 बिना पेयर रिलेशन नहीं परिबोनी सपोज हमें कहउसंदी फादर सन गोटे पेयर नेले से हम गोटे रिलेशन करिवा सिमिलरली सपोज हम कहउसंदी ब्रदर सिस्टर सो गोटे पेयर नेले जाई के हम गोटे रिलेशन तैयार करिबे अच्छा पेयर नबा माने हमको दीटा कंपोनेंट दरकार पेयर पई दीटा सबले कंपोनेंट दरकार अच्छा सेठी कोन हो फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट सहित रिलेट हबो बाय रिलेशन so that is why to form a relation a pair is always required pair is required means we need at least one set or maybe two sets एनु करी हमकु निश्चित भारे गोटे सेट दरकार न हेले दीटा सेट दरकार गोटे सेट किबा दीटा सेट न हेले आमे सेतरे पेयर तैयारी करि परिबा नाही अच्छा से पेयर तैयारी करिया पई आमे गोटे सेट रो कार्टेशियन प्रोडक्ट नबा so first is Cartesian product of sets it हमें स्टार्ट करिवा Cartesian product of sets अच्छा suppose capital A and capital B are two sets then their Cartesian product is A cross B जदि A और B दीटा सेट हेता है ताल तकर कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमें कहबा A क्रॉस B एटा मल्टीप्लिकेशन होए तमे एटा पढियो कोन A क्रॉस B अच्छा A क्रॉस B रे कोन रहइबो A क्रॉस B रे रहइबो which consist of all the ordered
pairs from the elements of A and B. So A cross B रे कौन रहेगा? A cross B रे हम पाइबा all the ordered pairs from the elements of A and B. A और B रे जितने element अच्छांदी से सब element को हम pairing करीबा. But pairing will be in proper order. से पेंट लिखा है कि कौन ordered pairs. Ordered pairs माने हमें जेतु एठी आगे A लिखी चंदी तापरे B लिखी चंदी. So first we'll take the elements of A as the first component. Then the elements of B will be taken as the second component. तो मैंने first हमें component रे A को नबा A रो element नबा. Second component रे हमें B रो element को नबा. अच्छा, for example, suppose A set is 1, 2, 3. एरे तीनटा element अच्छे. B set suppose the elements are 2, 3, 4. B रे तीनटा element अच्छे. So A set elements are 1, 2, 3. B set elements are what? 2, 3, 4. एबे मो Cartesian product बाहर करीबी A और B रा. So that will be A cross B. So first component more A रो आसिबो, second component B रो आसिबो. Means I'll take the pairs like this. 1, 2. 1 को आगे 2 सहित नबा. पुणी 1 को हमें 3 सहित नबा. पुणी 1 को हमें 4 सहित नबा. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Then 2, 2, 2, 3, 2, 4. Then 3, 2, 3, 3, and 3, 4. So this will become A cross B. एक ordered pairs हम एथि को कहउछंदी जेतु एठी हम गोटे proper order follow करछंदी. Order कोन follow करछंदी? First हम नउछंदी A रो element, second हम नउछंदी B रो element. It is in first A रो element, second B रो element. First A रो element, second B रो element. So that is why we say this is as ordered pairs. अच्छा, suppose एठी मु एबे B cross A बार करिवे. So B cross A नेले मु एबे उल्टा नेबे. First मु नेबे B रो element, second नेबे A रो element. First नेबे B रो element, second नेबे A रो element. Means I'll get like this: 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, and 4, 3. So एठी मु first नेली B रो element, second नेली A रो element. किंतु A cross B रो first नेथली A रो element, second नेथली B रो element. अच्छा, एबे देखा A cross B and B cross A. A cross B and B cross A, they are not equal. देखा A cross B रची 1, 2, B cross A किंतु 1, 2 9. We are having 2, 1. हाँ, किछि element equal अछि. किछि element equal अछि A cross B और B cross A रे. Equal थिबार reason हला A और B रे किछि common element अछि. देखा 2 and 3. They are present in A as well as in B. 2 और 3 A set अछि पुणी B set अछि. So that is why A cross B and B cross A, they are having a few elements as common. But A cross B and B cross A, they are not totally equal. ताले एठी कहि परिया हमें A cross B is not equal to B cross A. But number of elements in A cross B, number of elements in A cross B is equal to
number of elements in B cross A. A cross B and B cross A, they are not equal, but A cross B and B cross A have equal number of elements. A cross B cross A saman nuhe, but they have equal number of elements. Okay. Acha, this is your Cartesian product. Acha, ebe यार किसी property हमें देखिबा. These properties are very important. Properties of Cartesian products. Cartesian product में property देखबा. Number and property, just right now I said A cross B is not equal to B cross A, but n of A cross B is equal to n of B cross A. This is the first property. Acha, but A cross B and B cross A, they can be equal only in one condition. A cross B और B cross A केवल गोटिए condition equal हे परियो. केतळे equal हेबे? जेतळे A और B equal हेतिवो. जदि A और B equal हेतिवो, then A cross B will be equal to what? B cross A. Okay. Number 2. A cross B equal to B cross A implies and implied by A equal to B. तामने A cross B cross A से तो समान हुए नहीं. जदि A cross B और B cross A equal अच्छी, if A cross B is equal to B cross A, then definitely A is equal to B. Again, if A is equal to B, then A cross B is equal to B cross A. A cross B और B cross A equal हुए नहीं. जदि equal अच्छी, then you must be having A is equal to B. Okay, it happens from both sides. अगर पढ़ते हो if and only if, और तक हमें कौन दी implies and implied by. Number 3. If n of A equal to M, n of B equal to N, माने suppose A set रे M टा element अच्छी, B set रे N टा element अच्छी, A set रे M टा element, B set रे N टा element अच्छी. Then n of A cross B is equal to n of B cross A is equal to Mn. तामने A set जदि M टा element थिबो, B set जदि N टा element थिबो, ताले A cross B और B cross A both set रे Mn number of elements रहिबो. Suppose A set रे M टा element अच्छी, B set रे N टा element अच्छी, then A cross B and B cross A both will have Mn number of elements. एटी देखा previous page. A set contain 3 elements,
B set also contains 3 elements. Now A cross B and B cross A both contains 9 elements. A cross B as well as B cross A both contains 9 elements because A and B has 3 number of elements. Number 4. If A and B has n number of elements, common between them, then A cross B and B cross A will have n square number of elements common between them. মনে করো A ও B দুইটা সেট আছে। A ও B দুইটা সেট আছে। A ও B ভিতরে n টা এলিমেন্ট কমন আছে। A ও B ভিতরে how many elements are common? n number of elements are common between A and B. তাহলে তাহলে A cross B ଆଉ B cross A ভিতরে কেতটা এলিমেন্ট কমন রইব? A cross B and B cross A will have n square number of elements common between them. তার মানে A ও B ভিতরে যদি n টা এলিমেন্ট কমন থিব তাহলে A cross B ও B cross A ভিতরে n square number of elements will be common. আচ্ছা এটা previous page রে দেখা হইছো एग्जांपल আমি দেইছনি। This is A set, this is B set. Okay, between A and B 2 elements are common. These are the common elements 2 and 3. So these 2 elements are common between A and B. এই দুটা এলিমেন্ট A এর আছে পুনি B এর আছে। আচ্ছা এবার পড়লে যদি A ও B ভিতরে n টা এলিমেন্ট কমন রইব তাহলে A ক্রস B ও B ক্রস A ভিতরে n স্কয়ার নাম্বার অফ এলিমেন্টস কমন। তাহলে এটি A ও B ভিতরে যদি দুইটা এলিমেন্ট কমন রয়েছে তাহলে A ক্রস B ও B ক্রস A ভিতরে 2 স্কয়ার, that means 4 elements should be common. A ও B ভিতরে দুইটা এলিমেন্ট কমন আছে তেণু করে A ক্রস B ও B ক্রস A ভিতরে 2 স্কয়ার মানে চারিটা এলিমেন্ট কমন রইবা দরকার। আচ্ছা ଦେଖିବା এটি চারটা এলিমেন্ট কমন আছে কি নাই, যোটা কমন আছে তাকে আইডেন্টিফাই করিবা। আচ্ছা দেখো এটি 2 2 2 2 দুইটা জায়গা সেট আছে, গোটে 2 3 দেখো এগুলা দুইটা, দেন 3 3 দুইটা জায়গা আছে এগুলা তিনটা, তারপর দেখা 3 2 চারটা। দেখা এই চারিটা এলিমেন্ট আমার হলা কমন, গোটে হলে দুইটা এগুলা তিনটা, 1 2 এগুলা চারটা। So 2 square is what 4. তার মানে A ও B ভিতরে যদি n টা এলিমেন্ট কমন রইব তাহলে A cross B ও B cross A ভিতরে n square number of elements will be common. Okay, this one you have to remember. আচ্ছা next number 5. If capital A
is a non-empty set, then A cross phi nu is empty set equal to phi cross A will be equal to phi. A होची गोटे non-empty set, phi is empty set. ताले जदि हमें A रो Cartesian product नबा empty set सहित ताले it result हबो हमरो empty. हले अच्छा काहे केमति होची गोटे एग्जांपल दमनिया. Suppose A set हला 1 2 3 तीन एलिमेंट अछि. phi कोनोसी एलिमेंट नथिबो. This is empty set. Now I'll find out A cross phi. A of phi रो मु Cartesian product नेबी. Cartesian product में मु पेयर तैयार करिवि. A रो मु नेले फर्स्ट कंपोनेंट एबे empty set को आसीबी. empty set मु काहा को नेबी. empty set तो किछि नै. तेणु करी मु सेकंड सेट रो कोनोसी कंपोनेंट सिलेक्ट ही करि परिबिनी. A set रो 1 नै गेले सपोज. सेकंड सेट रो माने empty set भितरो मते गोटे एलिमेंट पुन नबार अछि. सेकंड सेट मु नेबी कोन किछि भी नै. हले so that is why A cross phi will be equal to what? Phi cross A will be equal to what? Phi. तेणु करी मु कोनोसी एलिमेंट नै परिबी नाही. So that is equal to how much? Phi. Okay. अच्छा similarly suppose मु phi cross A बार करिवे. Phi cross A I'll find out. अच्छा phi cross A बार करी माने मु फर्स्ट एठु गोटे एलिमेंट नबाकू चेष्टा करिवि. एठु गोटे एलिमेंट नेबी. एठु एलिमेंट मु नेबी कोन किछ तो एलिमेंट नाही. तेणु करी मु कोनोसी पेयर फॉर्मेशन करि परिबी नाही. So that is why A cross phi as well as phi cross A both are equal to empty set. तामने Cartesian product of any non-empty set with empty set will result as an empty set. Clear? So then number 6. If A, B, C are three sets, then it is tinita set neli. Gote A, gote B, gote C. Then A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. A cross B union C will be equal to what? A cross B union A cross C. Second bit. A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C. C. A cross B difference C. That will be A cross B difference A cross C. Okay. These are also important properties. A cross B union C will be equal to what? A cross B union A cross C. A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C. A cross B difference C will be equal to A cross B difference A cross C. These are also important properties. So this is all about Cartesian product.
Now we'll come to the definition of relation. अच्छा मु तुमको कही जे कौन सी रिलेशन हवा पई हेले आम गोटे पेयर दरकार पेयर न रिलेशन हो परिबने अच्छा एबे हम जो पढ़िले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़िले से कार्टेशियन प्रोडक्ट रे हमर सब पेयर थिला ना नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पढ़ले से कोन थिला पेयर थिला गोटे मिनट अच्छा डेफिनेशन ऑफ रिलेशन मु जो कहतली कौन सी रिलेशन हवा पई हेले से गोटे पेयर हमको दरकार अच्छा एबे जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़िले से कार्टेशियन प्रोडक्ट रे कोन रहउतला सब पेयर ही रहउतला अच्छा ताले से पेयर मानक भितर जदि हमें किछि पेयर नै जिबा ताहले से पेयर माने रिलेशन तयारी करिवे हले कार्टेशियन प्रोडक्ट रे सब पेयर थिला 1 2 1 3 2 3 एन सब पेयर थिला से पेयर मानक भितर जदि हमें किछि पेयर नै जिबा then that will make a relation अच्छा so relation definition लया if A and B are two sets then a relation capital R defined from A to B is a subset of A cross B is a subset of A cross B ताल जदि हम कोन करबा A और B दुटा सेट अछि ताकर कार्टेशियन प्रोडक्ट नै जिबा से कार्टेशियन प्रोडक्ट भितरु हमें किछि एलिमेंट चूज करके गोटे सेट तैयारी कर दवा
किसी एलिमेंट जो चूज करी गोटे सेट तैयारी कर दले then that will become a subset ताले से Cartesian product रा कोन जदि हमें गोटे subset नै जिबा that subset will become a relation defined from the set A to the set B. That means we can say that R is always a subset of A cross B. R सबले A cross B रा subset हबो. 11 क्लास से सेट थ्योरी तुम पढ़थिलो सबसेट केमति हुए ए जदि गोटे सेट हेता है तार सबसेट माने से सेट रा सब एलिमेंट ए सेट भीतर थिबा दरकार. अच्छा फॉर एग्जांपल A set is suppose A set is 1 2 3 voice जदि क्लियर आसुनी मे बी नेटवर्क इश्यू एठी तो ठीक ठाक अछि. B set is suppose 2 3 4 A set is 1 2 3 B set is 2 3 4 मु एबे A क्रॉस B नेबी जेम द प्रीवियस पेज रे नेथिले A cross B will be 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 and 3 4. This is A cross B. Voice not clear? Voice not clear means I think maybe network issue. Okay, Nasrin is writing clear. Okay, dekha. So A set elements are 1 2 3, B set elements are 2 3 4. So मैं A cross B बार कर दली. A cross B is 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4. This is A cross B. एबे मु ए A cross B रो जदि किछि भी एलिमेंट सिलेक्ट करने जिबे
I'll select a few elements. Okay. Then that will make a relation defined from A set to B set. A cross B mu kiछि भी element select करके नेबी. Suppose R1 मु तार ना देली. R1 ने मु element रखिली 1 2 then 2 3 and 3 4. माने मु तीनटा एलिमेंट सिलेक्ट करछि. एटा ओडे नै छै 1 2 पुणी ओडे नै छै एटु केते 2 3 आउट नै छै एठी 3 4. तीनटा एलिमेंट मु नै छै A cross B. So this R1 will be called as a relation. This R1 will be called as a relation defined from A set to B set. R1 को कहबा हम गोटे relation को set को A set ru B set को कहबा. Because R1 is a subset of A cross B. देख R1 ना सब element A cross B रे अछि. Clearly R1 is a subset of A cross B. So हम कहबा R1 is a relation defined from A set to B set. अच्छा, relation is also a set. तो हम 11 class रे पढ़थिलो set can be written in two method. Tabular method and set builder method. दुईटा मेथड हम सेट को लिख परिबा. Tabular method लिख परिबा नहले set builder method लिख परिबा. एट जो एलिमेंट को लिखि छि I have written this in tabular method. एलिमेंट ओडा मु सीधा सीधा लिखि दै छि. हले एलिमेंट मु सीधा लिखि छि डायरेक्टली 1 2 2 3 3 4. अच्छा मने करो ए एलिमेंट को लिखिला बेले मु किछ गोटे भाबी छि कोन से गोटे फार्मूला विषय भाबी छि. हले भाबी कि ताऊ लिखि छि. एबे जो फार्मूला मु भाबी छि किबा जो प्रोसेस मु भाबी छि हले किबा कॉमन गोटे कोन मु रूल भाबी छि बुझ पाला से रूल को यूज करके जदि मैं को लिखिबी दैट विल बिकम ए सेट बिल्डर मेथड. एबे मु लिखि छि खाली 1 2 2 3 3 4 लिखि दै छि. मोडा कॉमन रूल किछि भाबी छि किबा कॉमन फार्मूला गोटे किछि भाबी छि. If that will be expressed in the form of that formula, तो जदि कॉमन फार्मूला रे लिखि देबी that will become my set builder method. अच्छा एबे देखो एटा जदि हम x नबा एटा जदि y नबा. Similarly if this is x this is y, this is x this is y, then in this case y is equal to x plus 1. ये जदि x हुए ये y हुए, ये जदि x हुए ये y हुए, ये जदि x हुए ये y हुए, then y is equal to x plus 1. Or you can say x is equal to y minus 1. Or mu कहि परिबे x is equal to what? Y minus 1. Or mu कहि परिबे y minus x equal to 1. Or I can say y minus x is equal to what? 1. अच्छा ताले एटा होछि हमर कॉमन रूल एठी. ए रूल भितरे ए सब एलिमेंट माने इन्वॉल्व हेक अछंती. ए रूल द्वारा माने सब अटैच हेक अछंती. ताले एको जदि हमें सेट बिल्डर फॉर्म रे लिखिबा ताले हम एमति लिखिबा x, y such that y is equal to x plus 1. अच्छा मु y को x plus 1 लिखि देली. x कोठो आछि लिखिबी x a set रो आछि. y कोठो आछि y b set रो आछि. So this is my set builder form. मु एबे एलिमेंट्स को डायरेक्टली न लिखि के एलिमेंट्स को इनडायरेक्टली लिखिली. एथरे से टाइप रो पेयर माने रहि परिबे जोथरे सेकंड कंपोनेंट विल बी वन मोर देन द फर्स्ट कंपोनेंट. Second component will be one more than the first component. अच्छा एटा को आहुरी गोटे मेथड में लिख परिबा. अच्छा आउ को मेथड लिखा जाए एमदी लिखा जाए x, y belongs to R1 माने that kind of pair belongs to R1. से टाइप रो पेयर R1 ने रहिबो
जहाँ पाई y is equal to x plus 1 हबो हेले x कोड आसीबो a सेट रो आसीबो y b सेट रो आसीबो ता माने इतरा में एट देखा xy a r1 भीतर थिला xy एट r1 भीतर थिला एट मु समान कथाटा आउ गोटे वे लिखछि xy belongs to r1 सेम थिंग हैला अच्छा xy belongs to r1 हबो कोन हेले ना y is equal to केते हेले x plus 1 हेले सो y equal to केते x plus 1 लिखाइ छि अच्छा ताले एटा हेले एटा होछि ऑपोजिट रे भी हबो means I can give a here double implication means if y is equal to x plus 1 y is equal to x plus 1 then x comma y belongs to r1 एटा कोन और क्वेश्चन जने के शेयर करछि कोन ए तो बोधे take theta x equal to sin theta x tan theta x equal to dy by dx is acceleration due to gravity. I think this is physics question, not math. This is physics. ठीक है स्क्रीन कौन एपट छुड़े गला wait 2 minutes ठीक क्या स्टूडेंट स्टूडेंट फिजिक्स रो क्वेश्चन आइसला जे जो स्क्रीन पे जा एडजस्ट करो एटी कोन पड़े So this is another way of writing the relation x comma y belongs to R1 implies and implied by y equal to x plus 1. This is another method of writing the relation. Acha. Next is
domain and range of a relation. Domain and range of a relation. Acha, domain means it is the set of first component. Domain means set of first components of R. Range means set of second components of R. जदि गोटे आम रिलेशन लिखिंट से रिलेशन जे फर्स्ट कंपोनेंट रहा that set will be called as the domain of the relation. Say set जे second component रहा that will be called as the range of the relation. For example, in this relation R1 equal to 1, 2, 2, 3, 3, 4. If I write the domain, then domain of R1 will be 1, 2, 3. First component. First component means this, this, and this. Similarly, range is second component. What are the second components? 2, 3, and 4. Okay. So domain means the set of the first component. Range means the set of the second components. Very simple. For the relation, जो pair सब रहिला, say pair of first component will make the domain. Second component will make the range of the relation. अच्छा, next is number of relations. Number of relations. अच्छा, suppose A set has m number of elements. B set has n number of elements. A रे मने करा m टा element अछि, B रे suppose n टा element अछि. अच्छा, then A cross B will have mn number of elements. A cross B रे mn number of elements रहइबो. एट देखा फर्स्ट जो एग्जांपल हमें करथिले आजी. एट देखा A सेट रे तीनटा एलिमेंट अछि, B सेट रे भी तीनटा एलिमेंट अछि. A cross B रे केतरा एलिमेंट अछि? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A cross B contain 9 elements. ताले A रे जदि m टा एलिमेंट रहइबो, B रे जदि n टा एलिमेंट रहइबो, ताले A cross B will contain mn number of elements. ताले A cross B रे m into n number of elements रहइबो. आले? अच्छा, तमे 11 क्लास रे पढितलो पावर सेट. 11 क्लास रे सेट थ्योरी पढितलो पावर सेट. Power set means it is the set of the subsets. Eleven class रे पढ़थिलो power set, set of the subsets. Set तुम पढ़थिलो जे गोटे set रे जदि n टा element रुहे, then it will have 2 to the power n number of subsets. गोटे पढ़थिबो. कौन सी particular set रे जदि n टा element रुहे, then
it will have 2 to the power n number of subsets. 11 class set theory पढ़थिबो. अच्छा एटी A cross B रे mn number of elements रहला. A cross B रे mn number of elements रहला. So number of subsets of A cross B according to that formula will become 2 to the power mn. A रे m टा एलिमेंट रहला आउथर कोच भल कर सुनो. A रे m टा एलिमेंट रहला B रे n टा एलिमेंट रहला. So A cross B will contain mn number of elements. A cross B रे mn टा एलिमेंट रहियो. अच्छा तापर 11 क्लास रे में पावर सेट रा कांसेप्ट को जिबा. 11 क्लास रे पढितिलो जदि कोनोसी पर्टिकुलर सेट रे n टा एलिमेंट रुहे then it will have 2 to the power n number of subsets. A set जदि n टा एलिमेंट रुहे then it will have 2 to the power n number of subsets. एठी हमरा A set टा किए A cross B is A set here. A cross B is A set here. ताले A cross B रे mn number of elements अछि. ताले A cross B रे केतरा सबसेट हिजबो 2 to the power mn number of subsets हिजबो. हला class 11 so the related 2 to the power mn number of subsets हिजबो. So right now we have read that each subset is a relation. एबे हम पढिले जे प्रत्येक सबसेट कोन हुए गोटे रिलेशन हुए. So this will be also equal to number of relations from A to B. So जो 2 to the power mn लिखिले that will be equal to what? The number of relations from A to B. Clear? ताले इथे हमर number of relation हिजबो केते 2 to the power mn. जदि कोन हेताय A set रे m टा एलिमेंट थाय B set रे n टा एलिमेंट थाय. हला this is an important formula. So number of relations will become 2 to the power mn. So for example, suppose A set is this. A set is, I'm writing x such that x belongs to Z and modulus of x less than equal to 2. B is -1, 0, 1. A set will लिखुची x such that x belongs to Z and mod x less than equal to 2. Means A set is not written directly. A set is written in set builder form. But B set is written directly. B को हमें सीधा सड़क लिखते हैं. B रो एलिमेंट के -1, 0 and 1. अच्छा A को हमें लिखते हैं कौन? A set रे सही टाइप रो नंबर रहिबो जे इंटीजर हेतिबो. प्रथम दिन साला इंटीजर हेतिबो. आउ से इंटीजर रो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हबो और लेस देन 2 हबो. इंटीजर एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हबो नले लेस देन 2 हबो. सेही टाइप रो नंबर को हम एठी रख परिबा. सेही टाइप रो इंटीजर को हम रख परिबा. अच्छा नाउ क्वेश्चन इज व्हिच इंटीजर्स को इंटीजर एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 2 हबो किंबा इक्वल टू 2 हबो सेटा के हम जानिबा. को इंटीजर एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हबो किंबा लेस देन 2 हबो सेटा हमर जानिबा दरकार. अच्छा जो इंटीजर एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 2 हबो किंबा इक्वल टू 2 हबो
those integers are this -2, -1, 0, 1. देखा एतिकी इंटीजर को जदि हम नबा ए मानकर एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हबो किंबा लेस देन 2 हबो -2 तार एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2 -1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1 0 एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2 सो समस्तंकर एब्सोल्यूट वैल्यू आइदर 2 होची किंबा लेस देन 2 होची सो दिस इज ए सेट A set contains 5 elements, B set contains 3 elements. So we can say M is equal to 5, N is equal to 3. So M set M egala mara 5, N egala kete 3. So number of relations from A to B, that should be equal to 2 to the power mn. So it is 2 to the power 5 into 3 means the result is 2 to the power 15. So this will be the total number of relations that can be defined from A to B. If A contains 5 elements and B contains 3 elements. Clear? अच्छा हमें पढ़िले जे कोनोसी रिलेशन जदि हमें A रू B को डिफाइन करूछंदी then it is always a subset of A cross B. सबले से A cross B रा subset हबो. R is always a subset of A cross B. हैला? अच्छा तमे 11 क्लास से पढ़तिलो empty set is a subset of every set. 11 क्लास से पढ़तिलो. Phi is also a subset of A cross B. अच्छा then also I have read that A cross B also can be a subset of A cross B. 11 class number so empty set is a subset of every set. Empty set is a subset of every set. 11 class every set is a subset of itself. Sabu set nijara subset. Hele? This phi will be also a relation. A cross B itself will also be a relation. And this is the smallest relation. A plus B है sorry phi है सबुठु छोटा relation कारण empty set रे कोनोसी भी element नथिबो याडू छोटा हो तयारी कर बिरे हमें एटा है सबुठु largest relation. So A cross B is the largest and empty set is the smallest. अच्छा ये जो smallest हम लिखिले this is called as empty relation or void relation. एक को कहते void relation or empty relation. Largest to A cross B, that is called as universal relation. आउथर को सुनो कौन सी रिलेशन जदि हमें A रु B को डिफाइन करूछंदी A रु B को डिफाइन करूछंदी then it is always a subset of A cross B. Initially हमें definition पढ़ दिले any relation is a subset of A cross B. सबु रिलेशन A रु B को हमें जहां भी डिफाइन करूछंदी समस्त A cross B रो सबसेट हेबे. अच्छा तमे 11 क्लास से पुणी पढिछो जे empty set is a subset of every set. Empty set सबु सेट रो सबसेट हुए ताले empty set रे सबु सेट रो सबसेट हला ताले empty set निश्चित A cross B रो भी सबसेट हो ताले A cross B रो सबुठु छोटो सबसेट empty. Because empty set will not have any element at all. Empty set रे कोनोसी element नाही. So A cross B रो सबुठु छोटो सबसेट हला empty set. हला that is the smallest relation. And that relation is called as void relation or empty relation. अच्छा पुणी 11 क्लास से सेट थ्योरी पढ़ दिला जे सबु सेट निजर भी सबसेट हुए एटा पढ़ते हो तमे
A is a subset of A 11 class पढ़थिला अच्छा A जदि subset of A हला then A cross B is a subset of A cross B हो A cross B कौन हो A cross B रो subset हो अच्छा ताले यार सबुठु बड़ सबसेट एटा याटु बड़ सबसेट होई परिबन निज ठार बड़ के होई परिबन हले तेणु करी A cross B is the largest relation that can be defined from A to B and this relation is called as what universal relation A relation को हम कहते कोन universal relation A cross B आ सबुठु छोटो हला empty relation or void relation is it clear someone please respond मुक्तिमयी बबलू codomain is the second set entirely is called as the codomain हले actually relation रे codomain एते किछि रोल नाही function रे codomain बेसी रोल अछि relation एते बेसी किछि रोल नाही हले second set is totally called as the codomain अच्छा आ जण केट पचरतुला जे इमेज प्रीमेज कोन इमेज प्रीमेज हम फंक्शन चैप्टर मेनली पढिबा बुझिबला image preimage all this will read in function chapter hale actually सबु function उडा का relation सबु function उडा का relation किंतु सबु relation उडा का function नुहे हले सबु function उडा का relation हबो किंतु सबु relation उडा का function हबो नाही हले ओटे इक्वेशन वाला क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज आज तुमरो रिलेशन चैप्टर अछि फंक्शन पढाइला ले डोमेन रेंज करिवा इक्वेशन म हला फंक्शन आई थिंक विल बी द नेक्स्ट क्लास हला सेतले एटा करिवा आमे तो सिलेबस अनुसार प्रोसीड करिवा ना बुझ पला तो सबुठ छोटा रिलेशन हला एम्प्टी रिलेशन सबुठ बड़ रिलेशन हला कोन हमरो यूनिवर्सल रिलेशन अच्छा देन विल सी what is inverse of a relation inverse of a relation अच्छा if R is a relation defined from A to B जदि R को हमें डिफाइन कर सकते कोड कोड की A सेट टू B सेट को R is defined from A to B then its inverse is then its inverse is this one okay R inverse is a relation defined from B to A तो R जदि हम डिफाइन कर A रु B को
Okay. Then R inverse will be different. Anyone? Then R inverse will be defined from what? B to A. ताला R inverse हमरा कोड define हबो B ru A को define हबो हला किंतु भलकरी मन रखिबो R inverse is not equal to 1 by R केवल एटा समान नबने हला R inverse is only a symbol हला या भीतर algebra हम apply करि परिबेने R inverse equal to 1 by R हम लिखि परिबा नाही हला R जदि A ru B को define हेछि then R inverse will be defined from what? B. That means we can say R is a subset of A cross B. ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଛନ୍ତି so R inverse will be a subset of B cross A. So R inverse ଆମର କଣ ହବ B ରୁ A କୁ define ହବ R ଯଦି A ରୁ B କୁ define ହେଇଛି then R inverse will be defined from what? B to A. Okay. अच्छा एठी जो प्रीवियस पेज रे हम करथिले R लिखिथिले एठी देखा गोटे रिलेशन हम लिखथिले R1 एलिमेंट थिला 1 2 2 3 3 4 से समान को हम लिखुची A set is same 1 2 3 B set is 2 3 4 R1 I have taken earlier 1 2 2 3 and 3 4. This was R1. Now if we'll find out R1 inverse, it will be just opposite. Oh, simple bujiva. R1 inverse means it will become 2 1 3 2 and 4 3. Hello? Just on pair would go reverse करवा. This one become R1 inverse. अच्छा एट देखा R1 जो हम डोमेन नहीं थिले डोमेन ए सब एलिमेंट नहीं थिले 1 2 and 3 एट देखा 1 2 3 हमर रेंज को पड़ेला 1 2 3 now it is in the range of the relation. So you can say domain of R equal to range of R inverse. Domain of R equal to range of R inverse. Similarly, range of R is equal to a domain of R inverse. So जे R domain हेतिबो से R inverse रबो range हले आ जे range हेतिबो R रो से हबो R inverse रो domain बुझ परला ना कर किसी डाउट अछि please respond. Oh, सुना होता है Ayush someone is asking.
domain of R. It the domain means set of the first component. First component ki 1, 2, 3. This is the domain of R. 1, 2, और 3 first component. See देखो second रे R or inverse रे से second component is R inverse is second component. So that is why the domain of R equal to range of R inverse and the range of R equal to domain of R inverse. Clear? Understood now? Audio टा थिले पिलांकर आउट के बेसे clarity आसंदा. Domain means first component, range means the second component. Okay. अच्छा किए जन लिखी 11 क्लास रो पाठ बैकलॉग अछि. बैकलॉग थिले तो भारी प्रॉब्लम. Okay, you stay connected. Again, after 10 minutes, we'll start the second half. एठी हमें पढ़ देले फंक्शन ना सॉरी रिलेशन ना बेसिक्स. सेकंड हाफ रे हम पढ़िबा टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑल दैट. हला सेकंड हाफ रे हम पढ़िबा टाइप्स ऑफ रिलेशंस से सब. Again, we'll join in the second half.
Acha, so now we'll start the second session. Am I audible? Please respond. Am I audible? Okay. Acha, so already you have read what is relation, Cartesian product, then number of relations, then domain and range of relations, then inverse of a relation. All this we have read. This is our sorry gala. Hele? Acha, ଏବେ ଆମେ ପଢିବା relation on a set. ଆମେ ପଢିବା relation on a set. আচ্ছা suppose ତମ ଘରେ 5 ଜଣ member ଅଛନ୍ତି 5 members are there in a family ହେଲା ତମ ଘରେ 5 ଜଣ member ଅଛନ୍ତି ସେଇ 5 ଜଣ member ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ different pair ତିଆରି କରିବି I'll prepare different pairs out of those 5 members ହେଲା ମନେକର ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନେବି ତମକୁ ନେବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ହବ ନା ନାହିଁ is the father of ଗୋଟେ ରିଲେସନ ହବ ମନେକର ତମ grandfather କୁ ନେବି ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନେବି grandfather and your father ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ହବ ସେ ରିଲେସନ ବି ଏଲିମେଣ୍ଟ କରେଇବ is the father of ରହିବ ମନେକର ତମ grandfather କୁ ନେବି ତମକୁ ନେବି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ତମକୁ ନେବି ତାହେଲେ is the grandfather of ଗୋଟେ ରିଲେସନ ହବ ମନେକର ତମକୁ ନେବି ତମ grandfather କୁ ନେବି ତାହେଲେ is the grandson of or granddaughter of ଗୋଟେ ରିଲେସନ ତିଆରି ହବ ହେଲା ସେମିତି ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ନେବି ମାମାଙ୍କୁ ନେବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ହବ ବାପା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲେ ମାମା ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲେ ହେଲା ତାହେଲେ is the husband of ହବ ମନେକର grandfather ଆଉ grandmother କୁ ନେବି ତାହେଲେ is the husband of ହବ ତମକୁ ନେବି ତମ ଭାଇକୁ ନେବି ତାହେଲେ is the brother of କିମ୍ବା is the sister of ହବ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବି ଆମେ ରିଲେସନ ଡିଫାଇନ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ ବି ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିପାରିବା is this clear ଯାହା କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ someone please respond ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପେୟାରିଂ କରିବା ସୁଚିସ୍ମିତା understood okay very good ତାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଆମେ ରିଲେସନ ଅନିକେତ ବୁଝିପାରିଲନି ହଉ ଅନିକେତ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ ତମ ଘରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ମନେକର suppose your grandfather grandmother father mother ହେଲା ତାପରେ ତମେ ଦି ଜଣ ମନେକର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛ son ଜଣେ daughter ଜଣେ ଏତିକି ଅଛ ହେଲା these are the members in your family grandfather grandmother father mother son daughter ଏତିକି ଅଛ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ପେୟାର ତିଆରି କରିବି ହେଲା ତାହେଲେ ବି ରିଲେସନ ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେୟାର ନେବି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏୟା grandfather grandmother ଆଉ ନେବି father ଆଉ mother ଏମାନଙ୍କୁ ନେବି grandfather is the husband of grandmother similarly father is the mother of father is the husband of what mother ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ରିଲେସନ ତିଆରି ହେଲା ନା ନାହିଁ ସେମିତି ମନେକର ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ମୁଁ ନେଇଯିବି son daughter ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛି ତାକୁ ନେଇଗଲି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରିଲେସନ ତିଆରି ହେଲା is the brother of here the relation is what is the brother of ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ନେଇଯିବି grandfather ସହିତ son କୁ ନେଇଯିବି କିମ୍ବା grandfather କୁ ମନେକର daughter ସହିତ ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିଲେସନ ହବ ନା ନାହିଁ ଏଇଠି ରିଲେସନ ହବ is the grandfather of
is the grandfather of ताल देखिला ए जो समान फैमिली थिला ए समान फैमिली भितर जेते एलिमेंट माने अछंती तांकु जदि बे हमें पेयर करूछंती ताल भी रिलेशन थियरी होछि ना नहीं grandfather grandmother grandfather father grandfather mother grandfather son grandfather daughter एमानो जदि हम पेयर करूछंती then also we are getting a relation so that is why a relation is also possible in one particular set गोटे particular set उपरे भी हम relation तैयारी करि परिबा हला एबे बुझ परला अनिकेत respond okay ताले में गोटे particular set उपरे भी हम relation तैयारी करि परिबा अच्छा ता माने मु कोन कहूची if A is a non empty set is a non-empty set, then any relation R defined on A is a subset of A cross A. आमे इटी कार सबसेट नबा इटी हम A रो सबसेट नबा नहीं इटी हम कोन नबा A क्रॉस A रो सबसेट नबा आगु जतले हम A रो B को डिफाइन करतुले A रो B को डिफाइन करतुले सेतले हमर होतला A क्रॉस B रो सबसेट आगु हम होतला जतले A रो B को डिफाइन करतुले सेतले हमर R होतला सबसेट ऑफ A क्रॉस B एबे हमें ए सेट ऊपर डिफाइन करछन ता माने एठी हमर डिफाइन होछि ए क्रॉस ए रु ए तले ए केस हमर कोन हबो आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए आर एबे कार सबसेट हबो ए क्रॉस ए रो सबसेट हबो ए क्रॉस बी रो नय कि ए क्रॉस ए रो सबसेट हबो बुझ परला ता माने एठी फर्स्ट सेट इज ए सेकंड सेट इज आल्सो ए अच्छा ए केस रे जति हम देखबा नंबर ऑफ रिलेशंस ए केस रे सपोज हम देखबा नंबर ऑफ रिलेशंस केता हो अच्छा नंबर ऑफ रिलेशन आगु हमर होतला प्रीवियसली हम पढतले 2 टू द पावर mn पढतले में 2 टू द पावर केते mn अच्छा एठी हम a रु a को डिफाइन करछोंदी सो m and n both are equal so number of relation will be 8 to the power n square एठी हमर नंबर ऑफ रिलेशन केते हबो 2 to the power n square का एठी हम a रु a को डिफाइन करछोंदी हले सो फर्स्ट सेट जदि n टा एलिमेंट अछि सेकंड सेट जदि n टा एलिमेंट अछि ताले एटी mn becomes n into n it is what n square so it हमर नंबर ऑफ रिलेशन हबो केते 2 to the power n square क्लियर बुझ पालो समझते जणे के रेस्पोंड करो ओके संतोषिनी Alisa not understood ओ सुनो आउत बोल एटा हमर हला कार सबसेट R is a subset of what A cross A हला R होची A cross A रा सबसेट हला सपोज A सेट रे n टा एलिमेंट अछि A सेट रे n टा एलिमेंट अछि तले A cross A will contain n square number of elements or not A cross A रे केतरा एलिमेंट रहबो n square एलिमेंट रहबो ताले A cross A रा नंबर ऑफ सबसेट्स अबाउट 2 to the power n square 11 क्लास पठा 2 to the power n square each of the subset is a relation so the total number of relation will become what 2 to the power n square clear
अच्छा so set A उपरे हम 2 to the power n square number of relations define करि परिबा हला अच्छा एबे हम देखिबा types of relations on a set types of relations on a set अच्छा तुम 11 क्लास रे लॉजिक चैप्टर पढिछो लॉजिक फर्स्ट चैप्टर थाए काउंसिल ले पढिछो समवन प्लीज रेस्पोंड टोटोलॉजी फलासी ये सब पढ़ाई दियो कंजक्शन डिसजंक्शन पढ़ना पढ़ाई दियो 11 क्लास रे फर्स्ट ईयर रे पढ़तियो आई एम फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड सो दैट इज व्हाई हले मु एक्चुअली सीबीएसई स्कूल रे टीचर तेणु करी काउंसिल ले कोन एग्जैक्टली अछि 100% मोर आईडिया नाही हले आमे पढ़ला बेले फर्स्ट ऑल्दो आई एम आल्सो ए काउंसिल स्टूडेंट हले मु काउंसिल ले पढ़िछि आम पढ़ला बेले थिला फर्स्ट चैप्टर लॉजिक हले ता सहित एठी रिलेशन टिक अछि लॉजिक इट इन्वॉल्व होबो हले सो टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट हमें पढ़िया फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर 11 क्लास एटी मेनली तीन प्रकार रिलेशन हुए मेनली तीन प्रकार और अधिक अछि मेनली 3 टाइप्स फर्स्ट वन इज तीनटा नहीं मेनली चारिटा हला फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी रिलेशन second one is reflexive relation third one is symmetric relation fourth one is transitive relation okay so there are four main types it also main type और भी अछि antisymmetric अछि हला transponder relation अछि ए चारिटा फोर मेन identity relation then reflexive relation then symmetric relation then transitive relation ए चारिटा मेन टाइप रो रिलेशन अछि हला आ मैथमेटिकल रीजनिंग सेटा बे कहतो सेटा लॉजिक बोले अगर कहतला हला सीबीएस रे तक मैथमेटिकल रीजनिंग बोली कहउछंदी सीबीएस रे फर्स्ट चैप्टर नाही हला लास्ट अडको अछि अच्छा फर्स्ट हम पढ़िबा व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन अच्छा तुम समस्त आईडी कार्ड जो अच्छी कॉलेज अटेंड कर जो आईडी कार्ड अच्छी से आईडी कार्ड रे समस्त निजर फोटो अच्छी ना आउ कार फोटो अच्छी आंसर मी द क्वेश्चन
तुम जते आईडी कार्ड देखुछ निज फोटो अछि ना आउका फोटो अछि जेतरे निज फोटो अछि 100% हां ना नहीं मु जोडी जॉब करूची मोर जो आईडी कार्ड अछि हला मो आईडी कार्ड रे कार फोटो अछि निज फोटो अछि करेक्ट अच्छा सेमदी गोटे रिलेशन को मा आइडेंटिटी रिलेशन बोली कहबा जदि सेई सेट रो सब एलिमेंट माने केवल निज सहित रिलेट हेबे सेई सेट रो सब एलिमेंट माने अच्छा काउंसिल आइडेंटिटी रिलेशन नाही और नाही जे ठीक अछि तुम एंट्रेंस पे पढुछो अधिक टे पढिया दरकार हला नो प्रॉब्लम अधिक टे पढ गोटे सेट रो सब एलिमेंट नजी जदी केवल निज सहित रिलेट हबो ओनली निज सहित आउ कहा सहित रिलेट हबोनी then that relation will be called as identity relation ताला में लिखिबा a relation capital R on set A is said to be an identity relation if x comma x belongs to R only this word is important only for all x belongs to A this symbol stands for all हला इट जो वर्ड ता मु लिखिले ओनली दिस इज वेरी इंपोर्टेंट हला ता माने मु कहूची सब एलिमेंट जदी कोन हबो केवल निज सहित रिलेट हबो केवल निज सहित रिलेट हबो आ कहा सहित रिलेट हबो नाही हला सब एलिमेंट निज सहित रिलेट हबो then such a relation will be called as what an identity relation se relation हम कहे कोन identity relation अच्छा फॉर एग्जांपल सपोज ए सेट को मुने जिबी 1 2 3 ए सेट ऊपर गोटे रिलेशन मु डिफाइन कली R1 R1 is suppose 1 1 2 2 ଆଉ 3 3 हेले अच्छा कहले एटा आइडेंटिटी रिलेशन हबो ना नहीं देखलो एरा सब एलिमेंट निज सहित केवल रिलेट हेछि ना नहीं एरा एलिमेंट हला 1 2 3 1 1 सहित रिलेट हेछि 2 2 सहित रिलेट हेछि 3 3 सहित रिलेट हेछि so this will be an identity relation on A एटा ए पर आइडेंटिटी रिलेशन हबो हले अच्छा रो एको रिफ्लेक्सिव से तो कंफ्यूज होनी हले सुनो टे भल कर दर्ज धरकी अच्छा किंतु सपोज आई विल राइट R2 मु लिखिबे 1 1 2 2 3 3 ता से तो मु लिखि देले 1 2 ता संपूर्ण लिखि देले 1 2 लिखि देले ई आउ आइडेंटिटी रिलेशन हे परिबो नाही हले रिमेंबर दिस कैन नॉट बी एन आइडेंटिटी रिलेशन काई के परिबोनी कारण एठी हमर डेफिनेशन कहितला x, x belongs to R only तमे तम आई कार्ड रे निज फोटो सहित आउ का फोटो मिसै कि रख परिबो कि एठी देखो समस्त निज फोटो तो अछि पुणी 1 कोन करछि आउ 2 रो फोटो ता सहित मिसै कि रख दैछि 1 कोन करछि निजे तो अछि ताई कार्ड रे प्लस पुणी 2 रो फोटो से मिसै कि रख दैछि ताले ये हमर एठी आइडेंटिटी रिलेशन हे परिबोनी काई के परिबोनी ना ए तीनटा जाय हमर तो ठीक थिला असुविधा ई करथला सो ये आइडेंटिटी नुहे हला कारण हमर आइडेंटिटी रिलेशन अनुसार सब एलिमेंट केवल निज सहित रिलेट हबो
आउ कहा सहित रिलेट हबो नाही माने तमे को भाबी परियो गोटे टाइप रो गोटे स्वार्थपर रिलेशन ये हला से केवल निज कथा भाबिबो आउ कहा से कथा जम्मा भी भाबिबो नाही गोटे सेल्फिश रिलेशन इज दिस आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर someone please respond ये होची पूरा पूरी गोटे सेल्फिश रिलेशन से निज कथा केवल भाबिबो आउ का कथा भाबिबो नाही हला बुझ पला अच्छा देन हम देखिबा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोन एक्चुअली रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी भितरे माइनर डिफरेंस अछि बेसी बड़ किसी डिफरेंस नै माइनर डिफरेंस हला तेन कर पिला सबले ए दिटा भितरे कंफ्यूज होंदी नंबर 2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छा तमे मिरर आगे ठिया आइछ मिरर रे कोन देखुछ निज रिफ्लेक्शन देखनी कोन देखा मिरर रे निज रिफ्लेक्शन देखो ना नहीं रिप्लाई मी देखो निज रिफ्लेक्शन अच्छा निज रिफ्लेक्शन सहित पाखर जदि आउ के ठिया आइछ ताकू देखो ना देखनी पाखर जदि आउ के ठिया आइछ हले ताकू देखो पाखर जदि किछ जिंस रहि जाइछ से भी दिसे ना नहीं से भी दिसे हले ता माने एठी हमर कोन हबो सब एलिमेंट निज सहित रिलेट हबो निज सहित रिलेट हबा कंपलसरी हले आउ का सहित जदि रिलेट हेई गला भी चलिबो न हले भी चलिबो हले ता माने इट एवरी एलिमेंट विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ देयर इज नो इशू प्लस आउ का सहित जदि रिलेट हेई गला ताले भी किसी प्रॉब्लम नाही निज सहित रिलेट हबा किंतु कंपलसरी हले किंतु या पूर्व जो हम पढ़ते आइडेंटिटी रिलेशन सेठी केवल निज सहित रिलेट हम आउ का सहित रिलेट हेई परिबो नाही एठी निज सहित रिलेट हबो प्लस आउ जदि का सहित रिलेट हेई गला किछि प्रॉब्लम नाही तमरे एठी हम कहबा ए रिलेशन कैपिटल आर defined on set A is said to be reflexive if x comma x belongs to R for all x belongs to A. X comma x belongs to R for all x belongs to A. रो किसी व्यस्त होने मु कहूँ हला व्यस्त होने कौन लिखले एठी हमें ना मैं लिखले जे सबु एलिमेंट माने निज सहित रिलेट हेबे हला किंतु प्रीवियस केस रे हमें लिखितले एठी लिखितले x x belongs to R for all x belongs to S थिला ता सहित एठी गोटे वर्ड मु अटैच करथिली ओनली एठी गोटे वर्ड अटैच करथिली कोन ओनली ता माने से गोटे स्वार्थपर रिलेशन थिला बा सेल्फिश रिलेशन थिला केवल से निज सहित रिलेट हबो आ का सहित रिलेट हबो नाही केवल निज सहित रिलेट हबो किंतु एठी हम कहउछंदी निज सहित रिलेट हबो त कहउछंदी किंतु अन्य सहित रिलेट हबोनी बोली मना करा जायनी एठी एठी अन्य सहित रिलेट हबोनी बोली मना किछि करा जायनी त माने निज सहित रिलेट हबो अलगा सहित रिलेट हेले भी चलिबो न हेले भी चलिबो फॉर एग्जांपल same set I'll take a set 1 2 3 हले मोड रिलेशन होची R3 R3 मुनेले 1 1
2 2 3 3 ता सहित नेली 1 2 2 3 हले मते कहले एटा आइडेंटिटी रिलेशन होबो कि आइडेंटिटी होबो कि एटा आंसर मी अब आइडेंटिटी हबनी वेरी गुड आदित्य वेरी गुड आइडेंटिटी हबनी काहे हबनी कारण सब एलिमेंट निज सहित तो रिलेट हेछि हले निज सहित रिलेट हेछि किंतु ए पूरा पूरी स्वार्थपर होइनी ए निज कथा भाबिछि प्लस पुणी अलगा एलिमेंट कथा भी भाबिछि हले ए दिटा हमर रहि जाइछि एक्स्ट्रा तेणु करी आइडेंटिटी नुहे किंतु ये रिफ्लेक्सिव हे परिबो is reflexive but not identity on A ये रिफ्लेक्सिव हे परिबो किंतु आइडेंटिटी हे परिबो नाही कारण सब एलिमेंट निज सहित रिलेट हेछि सो एतिक दरकार जासी अछि हला तापर आउ दिटा एक्स्ट्रा अछि सो ये एक्स्ट्रा दिटा इट डजंट मैटर तेणु कर ये रिफ्लेक्सिव हबो अच्छा मन कर मु एटा नेबी R4 को नेबी 1 1 2 2 1 2 2 3 हले R4 अच्छा कहला R4 आइडेंटिटी हबो आंसर मी R4 आइडेंटिटी हबो हबनी वेरी गुड आइडेंटिटी हबो नाही काई हबनी कारण जे दरकार से नाही R4 आइडेंटिटी हबनी काई हबनी कारण हमर आइडेंटिटी पई कोन दरकार थिला सब एलिमेंट निज सहित रिलेट हबा दरकार थिला 1 1 सहित रिलेट हेछि 2 2 सहित रिलेट हेछि किंतु 3 3 नाही तेणु करे आइडेंटिटी हबो नाही हले ये आइडेंटिटी रिलेशन हबो नाही अच्छा कहले एटा रिफ्लेक्सिव हबो कि रिफ्लेक्सिव हबनी काई हबनी सब एलिमेंट निज सहित रिलेट हेछि कि 1 1 अछि 2 2 अछि किंतु 3 3 नाही तमन 8 जदि मु 3 3 को लगे देबी या भीतर नै कि 3 3 को नै कि ऐड कर देबी 3 3 को ऐड कर देबी ताले रिफ्लेक्सिव हे जिवो हले किंतु आइडेंटिटी हबो नाही 3 3 ऐड कर देले ये रिफ्लेक्सिव हे जिवो किंतु आइडेंटिटी हबो नाही किंतु मु जदि गोटे कथा करिवि 3 3 को ऐड कर देबी आ ए दिटा को माइनस कर देबी ए दिटा को काट देबी कौन करबी 3 3 को ऐड कर देबी 1 2 और 2 3 को काट देबी ताले कोन हो कहला 3 3 को ऐड कर देबी 1 2 2 3 को काट देबी ताले कोन हो आइडेंटिटी हबो अच्छा ताले कहले रिफ्लेक्सिव हबो ना नहीं सेती जदि करियो रिफ्लेक्सिव हबो ना नहीं रिफ्लेक्सिव हाँ वेरी गुड रिफ्लेक्सिव हबो कोन हबो आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव भी हे जिवो हले का रिफ्लेक्सिव पे हमर दरकार कोन सब एलिमेंट निज सहित रिलेट हबा दरकार अलगा का सहित रिलेट हो किंबा न हो डजंट मैटर तामने एटी गोटे जिंस हम बुझुचंदी सब आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव all identity relations are reflexive but
रिवर्स टा ट्रू नुहे रिवर्स इज नॉट बुझला सब आइडेंटिटी रिलेशन गुड़ाक रिफ्लेक्सिव हम किंतु सब रिफ्लेक्सिव रिलेशन गुड़ाक सब रिफ्लेक्सिव गुड़ाक आइडेंटिटी हम नहीं बुझला all identity relations are reflexive but reverse is not true clear बुझला समझते clear someone respond okay so this is reflexive relation and identity relation okay acha next is symmetric relation next is question is every reflexive can be identity no every reflexive relation cannot be identity but every identity relation is reflexive से अपन लिखली हले Ashutosh is asking is every reflexive can be identity no हले but every identity is reflexive okay एट जो लिखी थी previous page the guide all identity relations are reflexive but reverse is not true okay correct ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ମେସେଜ ଏମିତି ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ସିମେଟ୍ରିକ ରିଲେସନ के रो मोगन टेक्नीशियन को डाके एटा कोन गोटे आसुची एटा सो मेसेज एटा गोटे कोन एम्ति मेसेज आसुची आसला सिमेट्रिक रिलेशन देखा ए रिलेशन कैपिटल आर हेलो ये गोटे कोन आसुची मेसेज त एम्ति a relation capital R defined on set A is said to be symmetric if
XY belongs to R implies YX belongs to R. जदि XY pair अच्छी तापाई YX pair रहेगला. Okay, तापाई कौन रहेगला? YX रहेगला. Then the relation will be called as what? A symmetric relation. अच्छा, same set हमें नवा. A set मतलब जो बदमाश participant की जन अच्छी तुम बितरे. A set is 1, 2, 3. जने कौन गोटे लिखुच मेसेज माने स्क्रीन ऊपर आसी जाउची आंसर कोन आसिला जेठालाल कोन दाना आसी हला पुणी ता अच्छा same set I'm taking A set equal to 1, 2, 3. Suppose R6 I'll write like this. R6 is 1, 2.
2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 कहले एटा रिफ्लेक्सिव होबो की will this be reflexive answer me अच्छा एटा होबो की identity no अच्छा now symmetric yes symmetric is yes why because if this is xy then this becomes yx again if this is xy this becomes yx and this is xy as well as yx so konosi pair amane le opposite pair is also present hale konosi pair amane le opposite pair bhi achi so that is why this relation is symmetric but neither reflexive nor identity on A. So A set upre ये symmetric हबो किंतु reflexive हबोनी कि identity हबो नाही अच्छा जदि मु एटा लिखिबी 1 1 2 2 3 3 कहले एटा identity हबो ना नहीं this one will be identity or not हम आगु पढ़थिले बे टिके सम पूर्वरु एटा identity relation हबो हो ना नहीं अच्छा कहले एटा reflexive हबो ना नहीं reflexive हबो symmetric हबो ना symmetric हबो आसु तो symmetric भी हबो हले काहे के हबो symmetric देखा हले symmetric और regionality देखो it 1 1 the opposite is 1 1 it is present 2 2 opposite 2 2 present 3 3 opposite 3 3 is also present so this relation is reflexive symmetric as well as identity तीनटा जगह हो reflexive हबो symmetric हबो identity भी हबो हले अच्छा जदि मो r8 एटा लिखिबी 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 एटा कहले कोन हबो यार प्रॉपर्टी कोन हबो reflexive हबो symmetric हबो reflexive हबो symmetric हबो अच्छा identity हबो केटा हबो वेरी गुड हले सो reflexive हबो symmetric हबो किंतु identity हबो नाही कारण identity हमको कहितला केवल एलिमेंट निज सहित रिलेट हबो आ का सहित रिलेट हबो नाही अच्छा सपोज r9 आउट लिखुछ r9 is 1 1
2 2 1 2 2 1 ये कौन हम आंसर लिखी छाड़ कौन हम एटा सिमेट्रिक हम हाँ रिफ्लेक्सिव हम आइडेंटिटी आइडेंटिटी हम ना ये केवल कौन हम सिमेट्रिक आइडेंटिटी हमनी आदित्य आइडेंटिटी हमनी हले हाँ सुचिस्मिता करेक्ट आइडेंटिटी हमनी रिफ्लेक्सिव हमनी केवल सिमेट्रिक हम क्लियर बुझ पाला समझते अच्छा so this is reflexive relation symmetric relation and identity relation next is transitive relation transitive relation the relation capital R on set A is said to be transitive if xy belongs to R, yz belongs to R, implies xz belongs to R. तमने xy थिबो yz थिबो ता पई जदि xz रहि गला xy अछि yz अछि ता पई जदि रहिला कि xz then the relation will become a transitive relation xy yz पई xz रहिबा दरकार then the relation will be called as what a transitive relation okay अच्छा गोटे एग्जांपल नबा set is same a set 1 2 3 R10 suppose I'm writing R10 is 1 2 2 3 तापाई 1 3 1 2 2 3 तापाई 1 3 कहले एटा ट्रांजिटिव होबना नहीं अब अच्छा if this is xy so x is 1 y is 2 so this one can be taken as yz so this is pani tiye to this is xz this is xy this is yz this is what xz so the relation can be a transitive relation is this reflexive ये reflexive होबो होबो कि होबोनी symmetric होबोनी identity होबोनी so this relation will be only what only transitive ए रिलेशन केवल ट्रांजिटिव होबो हले ए रिफ्लेक्सिव नुहे कि सिमेट्रिक नुहे कि आइडेंटिटी भी नुहे अच्छा आउट रिलेशन में लिखिबा R11 R11 को मन कर मु लिखिली खाली 1 2 आउ किछि नाही
खाली 1 2 कोन हम कहले एटा ट्रांसिटिव हबो ट्रांसिटिव हो मुक्तिमयी सेइंग ट्रांसिटिव हबो हला आशुतोष सेइंग नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक करेक्ट ट्रांसिटिव एटा हबो हला अच्छा काहे कि ट्रांसिटिव हबो एठी लॉजिक रो काम अछि हला एठी लॉजिक रो काम अछि लॉजिक रो काम कोन तम पढिदिबो P implies Q is true if P is false पढिछ ना नहीं गले एटा लॉजिक रे एटा पढिदिबो P implies Q is true if P is false पढ़ना ए जोटा मु गोल बुलेछि पढिछ मैथमेटिकल रीजनिंग रे जे क्लास रे डिस्कस हेतु हां अच्छा किए कोच पढिछ किए कोच पढिन अच्छा ठीक अछि पढिन जदि मन रखिबो implication is true हला मन रख बोल करी implication is true if हला pH false तोड़े पढिदिबो ट्रुथ टेबल बोली पढिदिबो ट्रुथ टेबल पढिछ ट्रुथ टेबल पढिदिबो सेथरे में तो टेबल थियरी थिबो this is P this is Q P implies Q true true हेले true true false हेले false false true हेले true false false हेले true पढ़ना एटा हेले अच्छा सेटा हम एठी अप्लाई करिवा सेटा को एठी अप्लाई करिवा हम लिखिस कोन खाली 1 2 हेले अच्छा एठी जदि मु लिखिबी ना 1 3 कर दिया अच्छा सपोज मु लिखिबी एठी 1 2 comma 2 3 belongs to R implies 1 3 belongs to R R नुहे तो R11 लिखुछि हला एटा मु लिखुछि मु लिखिले 1 2 2 3 belongs to R11 implies 1 3 belongs to R11 अच्छा कहलो ए जो पार्ट टा को मैं गोल बुले देली ए पार्ट टा कहलो ट्रू ना फॉल्स एठी ए पार्ट टा कोडा ना
ମୁଁ ଯୋଉଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇଲି ଦେଖ ଏଇ ପାର୍ଟଟା 1 2 2 3 belongs to R11 1 2 और 2 3 ଏଥିରେ ଅଛି କି ମୁଁ ଟୋଟାଲଟା କଥା କହୁନି I am not talking about the total I am talking about only the left side ए लेफ्ट साइड एटा फॉल्स ना नहीं एटा फॉल्स अच्छा एबे कहला एटा ट्रू ना फॉल्स ए पार्टटा ट्रू वेरी गुड दिस पार्ट इज ट्रू अच्छा दिस इज पी ए पार्ट आला हमरो पी ए पार्ट आला हमरो क्यू so here p is false p is false q is true p is false q is true देख लो जोटा रेक्टेंगल कली से केसटा एप्लीकेबल होछि ना नहीं p is false q is true जदि p false हला q true हला then p implies q p implies q is valid or not p implies q is valid means this total statement becomes true a total statement कौन हो गला मोर true हो गला a total टा true हो गला total true means this is transitive ये कौन हो गला मोर transitive हो गला so this relation becomes a transitive relation clear किंतु ये reflexive होबनी identity भी होबो नहीं हले very good oh your doubt is R10 R11 meaning so नाम देइछि गोटे R10 माने R subscript 10 लिखाइ छै को रिलेशन को हम यूजुअली R लिखंदी R गुडा लिखा लाइन ना सेतमे R10 R11 एमदु लिखि छै हला गोटा ना देइछि मु खाली आ किछ नै हला only name so transitive means if xy is present yz present then xz should be present means that total statement should be true हला टोटल ता हमरो ट्रू होबा दरकार अच्छा देन जो रिलेशन तीनटा जाक हुए माने रिफ्लेक्सिव हबो पुनी सिमेट्रिक हबो पुनी ट्रांजिटिव हबो तीनटा जाक होतबो ताको हम कहबा इक्विवेलेंस रिलेशन एटाई पढिथिबो equivalence relation equivalence means it should be reflexive symmetric then transitive तीनटा जगह हेले हम त कहय कोन equivalence relation पढिछ न एटा पढिदिबो अच्छा equivalence class कोन पढिछ equivalence class equivalence class पढिन अच्छा और किए कोच पढिछ किए कोच पढिन और ठीक अछि अच्छा equivalence class कोन हमें पढिला
equivalence class. तम क्लास रो ये बोली आमे जतो कोन नि गोटे वर्ड रे स्टेटमेंट हम जल्दी सी मो क्लास रो कोन नि हला he belongs to the same class आमे जो कोंती ये सेही टाइप रो जिंस हला जदी ए गोटे नॉन एम्प्टी सेट हेताए if R is an equivalence relation on set A. R मगर गोटे equivalence relation का पे डिफाइन हेछि A set ऊपर. Then the equivalence class of small a belongs to capital A is equivalence class को ए टाइप का सिंबल दिया जाए हला small a belongs to capital A is this one ठीक है हाँ a partition of set X is a collection of disjoint non-empty subsets of X that have X as their union. Very good. Correct property. So then equivalence class of A is all those B belongs to A. All those B belongs to A. Hello? Such that A comma B belongs to R. Such that A comma B belongs to R. तामने equivalence relation भितरे equivalence relation भितरे A जहाँ सहित रिलेट हेछि A का सहित रिलेट हेछि एठी B सहित रिलेट हेछि तामने A जो एलिमेंट मानक सहित रिलेट हेछि सेही मानकर सेट को आमे कहिबा द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A. सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A कहले हम कोन बुझिबा सेही रिलेशन भितरे A कहा सहित रिलेटेड सेडा हम कोन कहबा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A हला अच्छा एको एमती बुझी परिबोनी या पई गोटा क्वेश्चन हम करिया क्वेश्चन कले बुझिबो हला फॉर एग्जांपल let A set equal to this is A set R is a relation on A defined as R equal to X comma Y such that modulus of X minus Y is a multiple of 4. Hello? Prove that R is an equivalence relation also find the equivalence class of 5. This is the question. समस्त क्वेश्चन लिख दियो
ये क्वेश्चन करछो क्लास रे आगरो करछो की करना अच्छा अच्छा एटी सेट रो एलिमेंट की असन हमें देखिबा आमे से इस सेट रे केवल इंटीजर रखिबा जो इंटीजर माने अछंदी केतर केते भितरे 0 रु 12 भितरे हैला इंटीजर्स आर बिटवीन व्हाट 0 एंड 12 बुझ पाला that means here the set is this a set is 0 1 2 3 dot dot up to 12 r equal to this is given x comma y such that modulus of x minus y is a multiple of 4. Modulus of x minus y is a multiple of 4. This is the relation. First we'll prove it is reflexive. For all x belongs to A, x minus x modulus equal to 0. 0 can be written as 0 into 4. So this is a multiple of 4. So you can write x comma x belongs to R. For all x belongs to A. So R is आमे जदि A सेट रो कोनोसी भी एलिमेंट आमे नबा जे कोनोसी एलिमेंट आमे नै जबा A सेट रो 0 नियर 1 नियर 2 नियर अप टू 12 जे कोनोसी एलिमेंट भी आमे हला आमे जदि सेही एलिमेंट को निज ठारो सबट्रैक्ट करिवा निजटू सबट्रैक्ट करी तार मैग्नीट्यूड नबा दैट मैग्नीट्यूड विल कम एज 0 0 can be written as 0 into 4 so definitely it is a multiple of 4 so that is why every element is related to itself when every element is related to itself the relation becomes what reflexive बुझ पाला समझते someone please respond okay so then symmetric symmetric definition अनुसार जदि xy अछि जदि xy belongs to r होची then yx should belong to r एटा हबा दरकार एटा ले रिलेशन कोन जिवो सिमेट्रिक इज अच्छा xy पई mod x minus y multiple of 4 yx पई mod y minus x should be multiple of 4 ये हबा दरकार किंतु mod x minus y mod y minus x both are equal or not कौन की कहला modulus of x minus y and modulus of y minus x they are same or different modulus of x minus y and modulus of y minus x समान अलगा सेम अच्छा ताले mod x minus y जदि multiple of 4 हला ताले mod y minus x will be also multiple of 4 okay ताले एटी हम एमती करिवा let x comma y belongs to r so mod x minus y
is a multiple of 4. So mod y minus x is also a multiple of 4. Reason kona? This is the reason. Modulus of x minus y equal to what? Modulus of y minus x. As a modulus of y minus x the multiple of 4, then I can write y comma x belongs to R. So R becomes symmetric. So R is symmetric here. All of you understood? Someone please respond. X minus y रो modulus जहाँ y minus x रो modulus भी से है Very good. अच्छा then transitive है transitive. Suppose xy belongs to R. So mod x minus y is a multiple of 4. ताला में नहीं परिबा x minus y modulus equal to 4m मुनि परिबी. M is a whole number. 4 multiple माने मतलब 4m नहीं परिबी ना नहीं. Correct or not? अच्छा यार magnitude जदी 4m है so x minus y may be plus minus 4m. Equation 1. गोटे नंबर मैग्नीट्यूड जदी 4 होईची ताले से नंबर टा प्लस 4 ही पारे किबा माइनस 4 ही पारे. अच्छा then let y comma z belongs to R. So mod y minus z is a multiple of 4. So modulus of y minus z तक मन करने जी 4n. N belongs to W whole number. कारण magnitude अति कम रे 0 हबो नाले पॉजिटिव हबो. सेट n belongs to whole number बोल लिखा होछि. हला ताले y minus z is plus minus 4n. ये दे दो इक्वेशन 2. एबे दिनो ऐड कर दिया. ऐड कर ताले y कटि जीवो. So x minus z will be plus minus 4 into m plus n. So modulus of x minus z is a multiple of 4. So x comma z belongs to. So R becomes transitive or not? R कौन है गला? Transitive है गला. हला? बुझ पड़ला? So R becomes reflexive, symmetric as well as transitive. So R becomes an equivalence relation. हला? Equivalence relation है गला. एबे हमको दरकार अछि equivalence class of 5. हमको दरकार अछि equivalence class of 5. 5 रो equivalence class किए. हला?
अच्छा 5 रो इक्विवेलेंस क्लास माने हमको सेट एटा दियैतला दिस वाज द सेट 0 1 2 up to 12 मु इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 कहले बुझिबे मु 5 8 रखिबे तामाने एटी 5 हला मोर a 5 is a now I need the value of b मते बे b रो वैल्यू दरकार जो वैल्यू डाक एथरु आसीबे हला b रो वैल्यू दरकार b रो वैल्यू कोठो आनिबु a भितर आनिबु हला कंडीशन कोन कंडीशन हला मॉड्यूलस ऑफ a minus b is a multiple of 4 एटा हितो दरकार आउ थर सुनो बोलग्री मोर इटी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 दरकार तामने 5 को मु एज्यूम कली a बोली 5 को मु एज्यूम कली a बोली नले x बोली y बोली परिबो 5 को मु a बोली एज्यूम कली हला ए नो x नैतला म x नै जा हला x नैतले 5 को मैं x बोली एज्यूम कले एबे मोर y रो वैल्यू दरकार मोर y रो वैल्यू दरकार such that modulus of x minus y will be a multiple of 4 हले ताल देखला एवढा हबो ना नाही 5 निजे हबो 1 हबो 9 हबो ए तीनटा हबो आ किछ हबो कि देखला देखो एको जदी x नउची एथु जहा भी मु y नउची एको नेली x एको नेली y देखला x minus y modulus is a multiple of 4 or not answer me so equivalence class of 4 कहले सॉरी 5 कहले ए सेट भितरे 5 जहा सहित रिलेटेड हला ए सेट भितरे 5 जहा सहित रिलेटेड सो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ पार्ट 5 अच्छा एबे जदि हमें सपोज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बाहर करिबा 1 कहले कोन रहि भितरे एलिमेंट 1 इक्विवेलेंस क्लास अब 1 जहा सहित रिलेट हबो कोन रहि गला 1 भी रहबो नीचे 159 हले कौन जन लिखी प्लीज टिके कहतु कौन बुझी पानु 159 अच्छा now suppose we'll find out equivalence class of 2 2 रे के रहबो गला 2 रे 15 रे ना 2 रे equivalence class इटा जण कोन बेसिस पटे बुझी पानु सर प्लीज टिके कहतु कोन लगछ ମୁଁ ଧନି ସେ ଆପଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିଥିଲା ସ୍କିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଓ PTR लिखଥିଲି prove that हां 1 6 10 very good 2 रो इक्विवेलेंस क्लास के रहबो 2 निजे रहबो 6 रहबो 10 रहबो और से PTR तक प्रूफ दैट
2, 6, 10. 2, 6 ଆଉ 10 ରହିବ equivalence class ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି equivalence class of 3 ନବା ତାହେଲେ କିଏ ରହିବ 3 ରେ 3 ରେ କିଏ ରହିବ 3, 7 ଆଉ 11 नहीं है। अच्छा पुणी जदि आम 4 नबा 4 नबा जदि आसो ना नहीं 4, 8, 12 12 भी जीवो राइट। अच्छा एबे देखो 1 रो इक्विवेलेंस क्लास 5 रो इक्विवेलेंस क्लास सेम और नॉट 1 रो इक्विवेलेंस क्लास एंड 5 रो इक्विवेलेंस क्लास सेम और नॉट सेम हैला। अच्छा तापर देखो एट जदि हमें 2 रो इक्विवेलेंस क्लास 3 रो इक्विवेलेंस क्लास हैला 4 रो इक्विवेलेंस क्लास और 5 रो इक्विवेलेंस क्लास हैला ये सब गुड़ा यूनियन नहीं जिबा कार 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो आ 5 रो ए समस्त रो यूनियन नहीं जिबा यूनियन ले कोन आसीयो कहलो 1 2 3 4 और 5 all this equivalence class I'll take the union. Very good. Then I'll get this total A set. से जो जोड़े प्रॉपर्टी कथा कहउला एबे हला I'll get the total A set. Very good. ताहले मते कहला ए जो A set टा को ए इक्विवेलेंस क्लास टा पार्ट पार्ट करी अलगा कर देइनी ए सेट टा को इक्विवेलेंस क्लास उडा कोन करछि पार्ट पार्ट करी अलगा कर दैछि हला सेट पे गोटा प्रॉपर्टी अछि इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल एट देखा एटा सब डिसजॉइंट एमान भीतर कोनोसी भी एलिमेंट कॉमन नाही ऑल ऑफ देम आर व्हाट डिसजॉइंट दे विल बी आइदर इक्वल और डिसजॉइंट आइदर इक्वल और डिसजॉइंट किंतु केबेले गोटे एलिमेंट कॉमन दीटा एलिमेंट कॉमन एमिति केबेले हबो नाही वेरी गुड सो गोटे एलिमेंट कॉमन दीटा एलिमेंट कॉमन एमिति केबेले हबोनी आइदर कंप्लीटली इक्वल हेबे नले कंप्लीटली डिसजॉइंट हेबे दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लास x belongs to x always हला अच्छा देन आउट प्रॉपर्टी हला इक्विवेलेंस क्लासेस पार्टीशन से सेट into distinct number of subsets बोली पढ़ दियो एटा जो पार्टीशन कथा जण कहउतला लिखितला प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस क्लासेस पार्टीशन से सेट into distinct number of subsets हला these are two important properties of equivalence classes बुझबला okay understood all so next class we'll do questions on this more questions on this hela okay can disconnect now thank you all